Yeah. Perfect. Welcome, Perfect. Please go welcome ahead. all to the Startup Grind modes of raising funds and how startup funding raising hacks and secrets by Anshul Dave sir. Let's have an audio-visual presentation on Anshul sir's bio, and let's see how he had made the ecosystem contributed. Yeah, so welcome Anshul sir, and we are back again with Startup Grind session with you on modes of fundraising and how funding is going to help out startups into the new mode as the ecosystem is growing along, and we are making a difference into the society, and India is now on increased GDP also. We are now close to the fourth rank in $1 trillion economy, and I hope entrepreneurship and startups had given the weightage to the GDP of India. So it's all over to you, and you can take it ahead, Anshul sir. Thank you so much, Atul sir, and a warm good evening to you and everyone present here. And thank you so much to Startup Glen Indore and your entire team for having me here. So I think it's a very interesting phase of the economy, very exciting phase that we're going through where, the world order is changing and all of us are pretty excited to see, India rising and going to the next level. Of course, as a nation, we have a lot of challenges, but we being the Vishwa Guru and the ones changing and taking the challenges, I think it's going to be a fabulous journey. It has been a fabulous journey, I think, from $1 trillion to a 2 trillion, 3 trillion, and now we are closing to $4 trillion economy. And I think almost 9 or 10 years back, we were the 10th economy in the world. Now we are the fourth economy in the world. So I think we've been climbing up gradually and steadily. And this growth has been phenomenal. Structural reforms, yes, by the present government, emphasis on the infrastructure, emphasis on building a lot of highways, ports, airports. So still a lot of catching up to do, but we're there. I was just reading somewhere that, we will be in the next 2 years, we will be the second largest network of metro trains in the world, just after China. And today only Japan is ahead of us, Japan and China. We've surpassed Korea also. We've surpassed US a couple of years back. So I think sky is the limit. And yeah, hopefully after, with the expansion of the Delhi Metro, with the Mumbai Metro coming in, most of the phases in the next couple of years, and metro starting in 12 other cities of India. So yes, the urban commute is going to become better. So now, how we are also the youngest nation on the planet, with the fastest growing youngsters and the young blood. So I think there are a lot of ideas that we have, and the best way to promote these entrepreneurship and such ideas is startups. And startups are doing really well. We are the third largest ecosystem in the world, just after the US and China, and doing quite well in terms of funding. We've fundraised, of course, globally it has slowed down in the last 1.5 years, but I'll try and help you with some hacks and secrets.
to help you understand कि fund raise कैसे होता है, किस तरह का fund raise होता है, and we'll use, as discussed earlier in the meeting, we'll try and use Hindi and English both, so that Yes, for the sir. ease of understanding of everyone. Yes, of course, So, sir, of course. तो कुछ हैक्स एंड सीक्रेट्स हम समझेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, कैसे लैंडस्केप चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले कैश बर्न मॉडल्स बहुत सारे चलते थे, अब प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर सबके सब लोग आ गए। होगी कि पेटीएम को 18 में वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे इन्वेस्टेड एंड दे डिड इट, which is of course not a very encouraging sign, but at the same time, a good thing is it's listed and the supply has been absorbed in the market. तो जितना गिरना था स्टॉक ने गिर दिया। अब भारतीयों को दूसरों बाहर के पैसे के ऊपर ग्रो करने की ही जरूरत नहीं है। हमारे कंट्री में भी बहुत सारा कैपिटल है जो अवेलेबल है, और हम वो देखेंगे कि किस तरह से वो चीज हम आगे रेस कर सकते हैं और उसको advantage ले सकते हैं. So I think we'll quickly begin the session. So what will be the touch points of our discussion? Of course, the funding opportunities, conventional equity, conventional में debt हम cover करेंगे कि आप loans, bank loans कैसे raise कर सकते हो. Journey of fundraise क्या होती है? बिजनेस फंडिंग के माइंडसेट, साइकिक क्या होता है, किस तरह से एक इन्वेस्टर सोचता है, किस तरह से एक startup सोचता है, and then I'll give you the 9 hacks and secrets. So I think we'll keep a time of close to 40 minutes for the presentation. I will try and wrap it up before that, and then the next 40 minutes, for the Q&A. So if you have any questions, all of you, please keep them reserved for the end. हम आखिरी में सारे questions लेंगे आपके, भले ही थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लगेगा, but we'll ensure कि आपके सारे questions आंसर हो. मैंने केस स्टडीज इसमें से हटा दिया है क्योंकि केस स्टडीज को काफी टाइम लगता है, पर अगर किसी को केस स्टडीज पढ़ने का मन हो तो मैं अलग से अतुल सर और उनकी टीम के साथ वो नॉलेज मटेरियल शेयर कर दूंगा. आप लोग, और मेरा ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगा, तो उसके ऊपर भी कोई इंटरेक्शन करना तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. So everyone, let's quickly begin. Om Shri Ganeshaya Namaha. Sir. So हाँ. अच्छा, I'll have to share the screen again. Okay. आपने हाइड बोला था यार, तो मैंने हाइड कर दिया, बट नहीं, no worries. Yeah, is it visible, Naman? Yes, sir. Yes, it's visible. Perfect. So again, touch points of today's presentation / discussion would be again funding opportunities, conventional and equity, and then equity में भी मैं आपको बहुत सारे interesting और छोटे developments भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों के advantage के लिए you can explore them as well. जर्नी ऑफ फंडरेज की हम बात करेंगे कि किस तरह से एक टिपिकल कंपनी, एक स्टार्टअप फंडरेज की जर्नी से गुजरती है, एंड ऑफ कोर्स द बिजनेस फंडिंग का माइंडसेट क्या होता है, साइकिक क्या होता है, एक इन्वेस्टर कैसे सोचता है और एक स्टार्टअप कैसे सोचती है. दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि एक थॉट प्रोसेस हमको पता होना चाहिए. एंड देन टुवर्ड्स द एंड मैं 9 हैक्स एंड सीक्रेट्स बताऊंगा, और फिर केस स्टडी का, जैसे मैंने आपको बताया, we'll take it forward later. So this is about me. I'm Anshul Dave, basically a chartered accountant by qualification, CEO and managing partner for Oceans Bridge. Till now, I've raised more than 1,000 crores for startups, and of course, we raise a lot of money for listed and unlisted companies as well. So I sit on the board of various listed and unlisted companies as well, 7 of them actually. So I've met more than 10,000 plus startups. I've seen their business plans. 100 plus companies का हमने fundraise किया है. I'm personally an angel investor in my personal capacity. I've made 32 investments till now and 13 successful exits. I'm also a
visiting faculty at few IIMs, IITs, SPJN, NMIMS, Great Lakes, आपके इंदौर का Acropolis also. So perfect. These are along the journey, God has been kind, and kuch awards and recognitions I've received, and so we will quickly move on so that we talk more about the startups. So now I think we'll speak of the investment cycle. किस तरह से एक स्टार्टअप की लाइफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है ये, उसकी लाइफ साइकिल कैसी चलती है. सो इनिशियली ऑफ कोर्स एक आइडिया का स्टेज आता है where you get the idea in the head, then you get the validation, proof of concept के बाद जो चीज आप करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट, आप मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाते हुए MVP, which is called in a common parlance. So after the proof of concept and the minimum viable product is ready, you usually put in your own capital or you go to friends and family and relatives. So we call it the full circle basically, jokingly. And इन लोगों, ये वो लोग होते हैं जो आप पे सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं आपके, लेकिन सबसे कम भरोसा करते हैं, for obvious reasons, because they know you and they always doubt you in your entrepreneurial journey. They'll say कि यार शायद आप नहीं कर पाओगे, या आपको जॉब करना चाहिए, आपको कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, आपको maybe it's not good after graduation, you should do a master's, MBA, work for 2 years, all that. So that's but a lot of times you get encouragement from your friends and family, and they're ready to put in money, say 20 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, or a crore of capital. So that's the first early stage of the seed capital that you get. Of course, there are a lot of angel investors जो seed round idea के basis पे भी invest करते हैं. And I'll give you a detail of that, in the few next slides. Then, of course, you have banks and financial institutions where in the growth stage you can, approach them. There are a lot of schemes of the government in the Startup India and CGTP, MSC and others. In the same stage, we have VCs, we have private equities, we have AIFs. Now, private equities, बहुत सारे early stage private equities होते हैं जो आते हैं. नहीं तो usually private equities series B, C के बाद ही आते हैं. But a lot of private equities now in India especially have started coming in at the early stage. We've seen that a lot in drone companies. We've seen that a lot in, one of the prominent company, Idea Forge, जो list हुई है, IIT Bombay की company थी. अभी almost 5,000 crores का market cap है. तो उसमें Infosys ने भी capital डाला था Series A में. So और प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी आ गए थे सीरीज ए में, क्योंकि काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा था वो बिजनेस. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर आइडिया, हाउ गुड इट इज एंड हाउ अट्रैक्टिव योर एग्जीक्यूशन स्किल्स आर. On the basis of that, PVCs and AIFs will line up. And of course, in the expansion stage, there are later stage VCs and PEs, and then you go for an IPO. Good thing in India is you can go for SME IPOs. There are a lot of options now, and I'll discuss that as well, both at BSc and NSC. ठीक है, perfect. So, फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है? सो कॉन्सेप्ट स्टेज जो होती है उसमें सीड और एंजल फंड आता है. ऑप्टिमाइजेशन स्टेज जो होती है वेयर योर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज रेडी, यूर टेस्टिंग इट एंड रेवेन्यू स्टार्ट किकिंग इन, और आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए होता है. फिर आती है बिल्ड स्टेज वेयर यू बिल्ड द प्रोडक्ट, यू बिल्ड द बास्केट. Once you build the product, you build various versions of it, you build various forms of it, the product line, the depth, and the product basket increases. That's where you require pre-series A, series A funds. And then for scaling up, you require more capital, which is series B and onwards. So सबसे पहले हम बात करेंगे challenges क्या क्या आते हैं, क्योंकि it's extremely important कि of the challenges that
typically come your way, and one by one we'll take them. So debt raising क्या क्या challenge again equity raise challenges की बात करें तो financing startups में from the point of view of you know banks, financial institutions, private equities, even angel investors, उनको lack of transparency दिखती है, financial hygiene नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे बंदे टेक्नोलॉजी के बंदे होते हैं, they cannot have a proper CFO in place or even a chartered accountant for that matter. तो financial hygiene काफी कम होता है, late recording होती है transactions की और so that's again a challenge. Little or no assets to for collateral. Of course, most of the startups are asset-light models, so there's hardly anything to have as collateral. There's no plant or building. Everything is on lease. Most of the laptops and iPads also are on lease. So a lot of times there's a business dependency on a single customer. ये ना हमको शुरुआत से याद रखना है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक या दो कस्टमर्स पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी वाइड स्प्रेड. दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू founders and entrepreneurs to be very cognizant of this fact. Your business is not dependent on a handful of customers and situated in a one single geography. It should be spread out. And of course, initially, a lot of banks, financial institutions, and people think that the business plan is poor and the project report is not well made. So, क्या क्या फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है कन्वेंशनल सोर्सेस से डेट वगैरह रेज करने के लिए, तो हम एक एक करके उनको लेंगे फेज वाइज और काफी मजा आएगा इसमें. So again, as I discussed, IPO funding, of course, funding by banks, NBFCs, industrial institutions, and we'll see how, and through the equity route. So IPO, we've discussed this. So SME IPOs काफी prevalent हो गए हैं. I think they were introduced more than 10 years back. The concept was introduced, and since 2017-18, this has been prevalent. And the two exchanges, BSE's SME and NSE emerge. There are more than currently 1,500 plus SMEs listed. Peak of market capitalization has been 1,65,000 crores. Currently, it's at around 1,40,000 crores and growing. SME market is extremely hot, and every week there are 3-4, small SME and even startups getting listed. So this is, the IPO route. Debt raise करने के लिए हमको क्या-क्या prerequisites चाहिए होते हैं, that we'll discuss, because it's important that you go to a bank or financial institutions. You should have all these things ready with you. One of them is a good CIBIL score, your credit rating, if that's applicable. Of course, no economic offenses, against the founders of the startup. No criminal records, very clear. Of course, no statutory defaults like any tax defaults, no previous loan defaults, and no stock market prohibitions. And all the KYC should be in place. So your GST number, your Gumasta, your shop establishment, and your company formation. थोड़ा सा हमारे देश में paperwork है. Yes, but it's getting better. From ease of doing business, I think we were somewhere around 140, 145 number, and now it has come to 80. Still a long way to go, but yes, we are significantly improving in that part. And I think in the next 2 to 3 years, we'll be, in the top 30 countries in the world in terms of ease of business. So these are the basic prerequisites in raising debt capital. अब इक्विटी के सोर्सेस क्या है, क्योंकि डेट ना बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होता है. ऑफ कोर्स वेंचर डेट का भी ऑप्शन होता है, जिसमें गिनती की 5 या 6 फंड्स हैं भारत में. अल्टीरिया, ट्राइफैक्टा, इनोवेन कैपिटल,
Black Soil, and a couple of others. So there are very limited options. Stride Ventures, of course, yes, that's there. So 5 funds के तो नाम मैंने आपको बता दिए. So there are less than 10 funds in India currently for venture debt, and venture debt also has slightly stringent norms where they charge anywhere between 16 to 24%, and they take warrants and upside in the earnings. So काफी difficult होता है ये समझने में. So venture debt also we've covered, and now the equity sources. So equity sources, क्या-क्या equity sources है हम वो देखते हैं. Seed investors and angel investors, of course, incubators and accelerators, जहाँ से you can get the initial capital in the form of grants as well. Angel and micro VC funds, again a very good source. VC and growth VC funds and private equity funds. So these are the primary sources of equity raising other than IPO. IPO, of course, comes at a slightly later stage, and that's why we've taken it, in the beginning, because that's for a later discussion. So prerequisites in raising equity capital, the most important thing is your company should be a private limited or a public limited company. You cannot raise money in a LLP or a partnership or a proprietorship. My friends, please, आप जाएंगे, आपका स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा एज LLP, no problem. But you cannot issue shares in a LLP. Please understand. So if an angel investor like me or anybody else comes to you and you say कि सर मैं आपको शेयर्स दूंगा, एक LLP में आप शेयर्स नहीं दे पाओगे. So from the beginning, have a private limited or a public limited company. Then of course DPIIT का स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन आपको कराना बहुत जरूरी है. MSME का उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना important है, because then you get a 45-day payment wala clause and nobody can hold your payments for more than 45 days. Of course, DPIIT में 2 registrations होते हैं, एक with income tax benefits. So please go with, for the income tax benefit one, where you have a window, and all of you listen carefully. 7 years का एक window मिलता है आपको, जिसमें 3 years का tax exemption होता है. तो अगर आप फर्स्ट ईयर से लेते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में हो जाएगा, और अगर आप फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर से लेते हो तो फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ ईयर हो जाएगा. सो जिस ईयर भी आप स्टार्ट करोगे उससे 3 साल के लिए आपको वो मिलता है एग्जेम्पशन. तो प्लीज गेट द रजिस्ट्रेशन विद द स्टार्टअप इंडिया थिंग along with the income tax benefits. Now, of course, your IPR has to be in place. IPR is the intellectual property rights, which is your logo, website, tagline, other brands and IPRs, whatever is applicable to you. A patent or a process patent, depending on the field of your startup. So, and of course, trademark and copyrights. So I'll just take you back, in the presentation, and if you see, on the top is my logo of Ocean's Bridge. You see the bridge and, the tagline, enabling growth strategically. This is a, trademark done for more than 84 countries. And, nobody can use this logo, this name and the trademark and the tagline in those 84 countries. So बहुत important होता है कि आप अपने IPR को सिक्योर करके रखें और उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर करवा लें. And it's not expensive, my friends. It's once you get the Startup India registration, it's done for very, very cheap. And of course, legal taxation and GST compliance. So you need to have a PAN card. You need to apply for your GST registration as well. So these are the prerequisites for raising equity funding. Coming to the modes of funding, of course, हमारे पास बहुत सारे angel funding के angel investors हैं. So to name a few of the prominent investors, there's Rajan Anandan, who's now Peak 15 Ventures के partner. He was earlier Google CEO MD. Ratan Tata doesn't need any introduction. Mr. Mohandas Pai, Anupam Mittal, Mukesh Bansal, Dheeraj Jain, and of course there are various angel investors like you see in Shark Tank and Horses Stable and various other such formats. Then you have angel investing groups, IP Ventures,
Venture Catalyst, Y Combinator, Kairetsu Forum, 50K Ventures, Mumbai Angels, Chennai Angels, Indian Angel Network. I'm sure there must be an Indore Angel as well. आपके वहाँ पे इंदौर में एक स्वान इन्वेस्टर्स नेटवर्क है. I know Yes. them very well, and they're Yes. doing some good work as well. Yeah, they are doing phenomenal. Yes, exactly. So, you can approach such angel investor groups, which will be very, very handy for you. They will also guide you for, what are the various sources. And of course, they take you to their member angels. So, the validation and the proof of concept and the minimum viable product can be easily tested there. And of course, there are various online platforms like AngelList and Let's Venture, which are very, very prevalent. Again, this is not an exhaustive list. बहुत सारे और भी आ गए हैं, and they're doing good work. It's a very indicative list that I've put here. So now incubators and accelerators, दोनों में थोड़ा thin line का difference होता है, but आपको पता होना चाहिए incubator बहुत पहले आपको जाना चाहिए. जो अटल incubation mission के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के incubators होते हैं, and I'm a mentor at a few Atal incubation mission ones. And then there are, of course, state government incubators, there are private body incubators, like, a lot of private universities also have it. And it's incubators are very ideal for students because it's all research-based startups, and hardware development के लिए बहुत important होता है क्योंकि आपको lab मिल जाती है testing के लिए. That is one. आजकल 3D printers भी most of the incubators में available हो गए, जहाँ पे आपको बहुत सारे products भी बनाने हैं. And now there are metal 3D printers also available. I've seen them personally at various places. तो आपके products को बनाने के लिए और उनके parts के लिए आपको import नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको 2-2, 3-3 महीने का waiting नहीं होगा. All you'll have to do is get the molds, get the design approved, and you can 3D print it there at the incubators. बहुत interesting चीज होती है, मुझे देख के बहुत मजा आया. So if you get a chance, go to any of the incubators, and they'll be happy to walk you through that. Accelerators come slightly ahead, and there are various accelerators जो आपको, as the name suggests, ये fast काम करवाते हैं, ये आपको तेजी से भगाएंगे. Or this has to be done, please realize, where the proof of concept is in place and the minimum viable product is ready. Then only you'll be able to match up with their pace. So few of them are 500 startups, NASCOM 10,000 startups, Cisco, Microsoft, Google, BCATS का भी है, GSF है, Aphthonia Labs is again very prominent in Bangalore and Mumbai, run by one of my close friends. They are into fintech and T-Labs. So these are the incubators and accelerators. क्योंकि ये point मैं specifically 2 मिनट रुक के emphasize करता हूँ, students के लिए बहुत important होते हैं, और I'm sure Atul sir and his team will be able to guide you with a few of them in your city as well. Perfect. हम एक comparative analysis करेंगे और उससे समझना better होगा कि कब एंजल और माइक्रो वीसी फंड आता है, कब ग्रोथ और वीसी फंड्स आते हैं, और कब प्राइवेट इक्विटी फंड्स आते हैं. सो हम आई हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू द इन्वेस्टमेंट साइज, स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी स्टेक आपकी कंपनी में लेते हैं. नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज देयर एग्जिट स्ट्रैटेजी. सो ये आपको बहुत क्लैरिटी देगा ये वाला स्लाइड कि किस तरह से फंड रेज होता है और किस तरह से आस्क होती है. सो ऑफ कोर्स 1 से 10 करोड़ के लिए you'll always have to go to few angels and micro VC funds. Where do they invest? Of course, they invest at the idea and the setup stage. They usually assuming they may take 20 to 30% of your company, assuming you get a valuation of say anywhere between 5 to 10 crores. So if you assume, I'm just taking a random number, तो अगर आपको 10 crore का valuation मिल रहा है और वो आपकी कंपनी में 2 crore लगा रहे हैं, so मोटा मोटा 25 से 30% की equity वो लेंगे. And when do they exit?
बिकॉज एवरीबडी विल आस्क यू माय फ्रेंड्स कि आप एग्जिट कैसे कराओ, क्योंकि क्या होता है कि अभिमन्यु को सिर्फ चक्रव्यूह में घुसना ही जाना है, अभिमन्यु को तो उससे निकलना भी है ना। सो आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि भाई मैं मेरी कंपनी में किस लेवल पे इसको लेके जा पाऊंगा। हमको ये नहीं करना है कि यार बस प्रोडक्ट बना लें और अगले 3 महीने में 15-20 क्लाइंट्स आ जाए, वो तो बिजनेस साइड में हो गया। एज अ कंपनी आपको सिर्फ बिजनेस को ग्रो नहीं करना है ना, आपको तो पैसे भी रेस करना है, आपको उनको मंथली अपडेट्स भी देना है, और उसके बाद आपको एग्जिट भी करवाना है। और अगर आप जब उनका एग्जिट करवाओगे, या तो आपका बिजनेस इतना अच्छा करना चाहिए कि आपके पास पैसा हो उनको एग्जिट देने के लिए, अदरवाइज आपके पास नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स रेडी होने चाहिए जो उनके बाय करके उनको एग्जिट देके चले जाए। I was talking to one of my friends, and their company got acquired by a software company. I cannot name them because they are into a transition phase. So almost series B तक उन्होंने रेस किया था, and then they said कि we were always clear that either we'll get acquired by a very large company or we'll try and sell ourselves to one of the banks or financial institutions because it's a fintech. So ये क्लैरिटी ना 6 या 7 साल पहले फाउंडर्स में थी जब वो मिले पहली बार और जब उन्होंने ये आइडिया को डिस्कस किया। तो माय फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक फुल स्टैक। एक फाउंडर जो होता है वो सीईओ और एमडी तो होता ही है कंपनी का। इट्स अ वेरी ईगो बूस्टिंग डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन तो आप कुछ भी ही मालिक हो, आपकी नौकर हो, सुबह शटल उठाना भी आपको है, झाड़ू लगाना भी आपको है, और इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन भी आपको ही देना है, और सेल्स की भी प्रेजेंटेशन आपको देना है, और बैंकिंग का भी काम आपको करना है इनिशियली हमसे, एंड प्रोडक्ट का टेस्टिंग भी आपको करना है। सो इट्स नॉट अ इजी टास्क। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी वेरी ट्रूथफुल एंड रियलिस्टिक हियर। सो प्लीज बी रेडी फॉर अ पेनफुल स्ट्रेसफुल जर्नी, but it will be rewarding at the end, for sure. And of course, during the journey also, it's very fulfilling and rewarding. So, it's a plunge. Please understand, entrepreneurship is not a 9 to 5 job. आपको 24/7 ये चीज रहेगी और अपना पड़ेगा. You will sleep and drink your own startup, and कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती यार, कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, सब सिर्फ यही आपका ईमान धर्म होगा, यही आपका दिन और रात और खुदा होगा. सो अंडरस्टैंड 2 to 3 years of your life, you'll have to forget everything. You'll have to forget spending time with your family, spending time with with your friends, taking holidays, taking a break. ये हो तो बहुत अच्छी बात है. आई विश ये चीज आप लोग कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए तो रिग्रेट्स नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. सो फुल स्टैक में एग्जिट स्ट्रैटेजी भैया बिल्कुल तैयार रखिएगा. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स VC एंड ग्रोथ स्टेज, जहां पे आप anywhere, again these are tentative numbers, but typically a 15-20 crore to a 75-80 crores or till $10 million is what typically VCs invest. Of course, there are large VCs also, but I'm talking about the 80-90% VC category, in the Indian markets, and they come at a growth stage, usually. जब minimum viable product आपका ready हो गया है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले रेडी हो गया था, एंड देन आपने उसकी टेस्टिंग कर ली है, और अब वो ग्रो करने के लिए आप एक सिटी में आपके पास कुछ गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, यू वांटेड टू टेक इट टू 3 to 5 to 7 to 10 cities of the country and eventually to other nations of the world as well. So that's the growth stage basically. And growth stage में आप ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी डेवलप करोगे, क्योंकि ग्रोथ में ऐसा होगा कि इट्स नॉट द ग्रोथ जस्ट ज्योग्राफिकली और एज पर द प्रोडक्ट लाइन और एज पर प्रोडक्ट डेप्थ. सारी तरीके से ग्रोथ होगी. एवरी डे यू विल बी हायरिंग सम और द अदर पर्सन इन द कंपनी. सो द ग्रोथ इज गोइंग टू बी मैसिव, एंड यू नीड द राइट टीम ऑफ फाउंडर्स, द राइट टीम इन प्लेस टू हैंडल दिस सॉर्ट ऑफ प्रेशर. So
Usually they take anywhere between a 10 to 20% stake in the company. All of both of these people, by the way, the angel and micro VC funds and VC funds, growth VC funds will ask for a board seat. आपको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनका अपॉइंट करके रखना पड़ेगा, who will be overlooking your board. It's extremely important. At the same time, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे रिव्यू लेते रहेंगे, वो आपके ऊपर सर पे बैठे भी रहेंगे. अगर नहीं बैठे तो बहुत अच्छी बात है, यू विल बी लकी. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टिपिकली वो ये चीजें होती है, तो आपको इट शुडंट कम एज अ सरप्राइज कि अरे भाई ये तो बोर्ड सीट मांग रहे हैं. वो हो सकता है अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का किसी व्यक्ति को बैठाएं या ना बैठाएं, वो सेकेंडरी है, बट बोर्ड सीट के राइट्स वो जरूर लेके रखेंगे, ये बात तय है. And they usually come at a series B or series C से उनका exit होता है. So that's where the VC and growth VC funds typically exit. Now coming to the private equity funds, they invest anywhere between 75 crore to 1,000 crore. The typical example of a VC funding, a private equity funding in Indore was a very matured company called Pushpo Masale. आपके डायमंड चिप्स में भी हुआ था, बट पुष्प मसाले में 91 पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया था. सो दे आर एक्स सिकोया विच इज पीक 15 पार्टनर्स नाउ. सो एक्स सिकोया के बंदे हैं, आई नो फ्यू ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स एज वेल. सो उन्होंने करीब 400 करोड़ के वैल्यूएशन पे 100 करोड़ लगाया कंपनी का और 25% स्टेक लिया. सो इफ यू and Pushpa Masale, by the way, is a 40 plus year old company. It's a very reputed brand in central India and now spreading very fast into southern part of India as well as western and northern India as well. तो बहुत अच्छा बिजनेस है इनका. तो कंज्यूमर कंपनीज में बहुत इजी होता है प्राइवेट एक्विटी फंड्स का आना, और बहुत सारे प्राइवेट एक्विटी फंड्स फिर आईपीओ के लिए भी लेके जाते हैं. जैसे वन ऑफ अगेन a prominent example is ICICI Ventures. उन्होंने सेलो करके कंपनी है, उसमें पैसा लगाया. सेलो जिसका there are kitchenware and cello pens, and now there's been an IPO a couple of months back. They come at a expansion stage where everything is expanding in the company, and they take 10 to 15% stake in the company. Of course, they will take a board seat for sure, because this is the most vital stage for the company where the expansion is happening, and their exit can be a series E, an IPO, acquisition. IPO I give you a couple of examples, and strategic sale. So Pushpa Masale का भी शायद आप लोग जल्दी ही IPO सुनेंगे. That may happen. राइट. सो जर्नी ऑफ फंडरेज क्या होती है माय फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जो स्टार्टअप्स का, और मैं आपको टाइमलाइन भी बताऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डू द इन्वेस्टर हंटिंग. यू विल हैव टू फाइंड द सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, आप किसके सामने पिच करने वाले हो. फिर आइडिया एंड पिचिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट डेक्स होगा. आप यू विल हैव वेरियस प्रेजेंटेशंस इन फ्रंट ऑफ देम, एंड देयर कैन बी 2 rounds, 3 rounds of this. Then, of course, there'll be a due diligence where they'll do a legal, technical, and a product due diligence, and seek various reports. फिर उसके बाद negotiation होता है valuation पे. It's a never-ending process. So ये stage पे ना आजकल एक बहुत ही interesting way of fundraising आ गया है, iSafe. आप लोग लिख सकते हैं iSafe notes आ गए हैं. You can Google it also. Lot of early stage VCs are also using it. 100x VC is also prominently using it. बहुत सारे लोग कर रहे हैं अब तो, कि वो बोलते हैं भैया आपका ना वैल्यूएशन के ऊपर
Right. Hi everyone, am I audible? Naman, am I audible now? One moment. Sorry for the technical glitch. I think my internet just conked off here. So just quickly get back to the presentation. So we were discussing something very interesting and फ्लो में ये पता नहीं चले ही गया और मैं बोलता ही जा रहा था. I'm just connecting my Bluetooth. Give me a moment, please.
Okay, just it's taking a bit of time. One moment. All right. Am I audible? Naman? One moment. So I'll quickly do the screen share. Yeah. Is it good? Yes, sir. Perfect. So we were on the negotiation part. Hello. Yes, sir. Yeah. So, Naman, just speak something so that, I just Yes, sir. We can clear. hear you. We can hear you. Okay. Perfect. Thank you. So I was saying that on the negotiation of valuation, there'll be, we were discussing about iSafe, that iSafe notes. So, जो इन्वेस्टर होता है वो बोलता है यार देखो आपका जो भी नेक्स्ट राउंड होगा ना, अज्यूमिंग आज आपका वैल्यूएशन 10 करोड़ का है, हमको नहीं पता वो 10 करोड़ का है या नहीं, मान लीजिए नेक्स्ट राउंड आपका 30 करोड़ के वैल्यूएशन पे होता है आफ्टर 18 मंथ्स और 24 मंथ्स, सो हम उस पे ना 30% डिस्काउंट लेंगे या 40% डिस्काउंट पे हमको हमारी जो आईसेफ नोट्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा. सो कन्वर्टेबल नोट्स के ऊपर आजकल बहुत सारा फंड रेज होता है. सो यू डोंट वेस्ट टाइम इन द नेगोशिएशन ऑन वैल्यूएशन. You say that your valuation is 100 crores, very good. Get the valuation in the next round and give the existing investors a certain discount on that because they are believing in your idea in today's stage. So this is how the negotiation on valuation is done. Then, of course, the documentation and the legal work happens, and then the fund clearance. क्योंकि क्या होता है यार, बहुत सारे अलग अलग लोगों से भी पैसा आ सकता है. हो सकता है there are set of 8 or 10 angel investors who are investing. Couple of them are traveling, couple of them are out of India, couple of them are, busy with some functions, some weddings, some of their businesses. So typically a period of 5 to 6 months is involved and multiple investor meetings होती है. So, it's a very detailed planning and detailed process and requires a lot of iteration. So आपको पेशेंस बहुत सारा रखना पड़ेगा. फंड रेजिंग की जर्नी इजी नहीं होती है, पर करना पड़ेगा. That's how it is. But you have to be cognizant of this fact कि it takes 4 to 6 months. तो आपके पास उतना adequate कैश बैलेंस होना चाहिए. अगर आपके पास 4 से 6 महीने का पैसा आज नहीं है तो फंड रेजिंग आज ही चालू कर दो. उससे उतना ज्यादा लगेगा एंड प्रोफेशनल सपोर्ट भी लगता है. सो लॉट ऑफ people like us, like investment bankers, are required for this. So quickly we'll understand the mindset and psychic of both the investors and investees. अब investor जो होता है वो क्या बोलता है, बॉस मेरी कंपनी तो नेक्स्ट यूनिकॉर्न बननी चाहिए, मेरे को तो ऐसे आइडिया में लगाना है जो 10,000 करोड़ का कंपनी बन जाए. And I need maybe 100% growth month on month. You may say it's ridiculous, it's obnoxious, but that's how it is. That's the investor's mindset. इन्वेस्टर का माइंडसेट ये होता है यार कि he needs money to do the commercial launch. He needs money to acquire maybe the first 5,000, 10,000, 50,000 customers and to grow the business to the 5-10 cities and to pay my employees and my fixed expenses and to break even and achieve profitability. तो दोनों का माइंडसेट बहुत अलग होता है. उसको प्रॉफिटेबिलिटी लाना है, सामने वाले इन्वेस्टर को बहुत सारा यूनिकॉर्न बनाना है. So how do you bridge this gap? It's extremely important, and that's how I'll give you a few 9 hacks through which you can bridge this gap.
So first important thing है, ध्यान से सुनिएगा. First 3 minutes and 44 seconds are the most crucial during your presentation. So आपका जो interest है ना, and this is through a B schools like Harvard, Stanford, Wharton, Yale, Tuck, Kellogg, कि 4 मिनट के बाद ना, या 4 मिनट से कम में भी इन्वेस्टर का टाइम चले जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि बॉस whether I'm going to invest in this company or not going to invest, and they lose their attention. So it's important that those 4 minutes are your golden minutes. आप पूरा ताकत लगा दें और अपने बारे में अपने always ask the investor that what do they want to hear. They want to hear your story or they want to hear about the product first. क्योंकि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, अपने co-founder को इंट्रोड्यूस करोगे, all those things will take time. So first 4-5 minutes are the most important. Then explain and express the USP, the unique sale proposition of the business, covering your business idea, your company, industry, sector, and the founders. So founders के बारे में ना usually last में बोलना चाहिए, till the time they ask you कि tell us about your journey and tell us about how did you guys meet. If they are asking this question, good. Otherwise आप अपना business idea और अपनी company, अपने concept और industry और sector के बारे में बताओगे. Assume आप defense का कुछ drone बना रहे हैं, तो आप बताएंगे कि डिफेंस सेक्टर में कितना स्कोप है, इंडिया कैसे मेक इन इंडिया में आज 5 साल 10 साल पहले वी वर इंपोर्टिंग ऑल द आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड नाउ वी आर नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस and very soon we will be one of the largest exporters of defense in the world. So this is how you will talk about the sector broadly and the industry broadly, and then you will come on what is your company doing and what is the product and आपका कितना scope है market. Third hack is investor mantra is show me the money. So they look for numbers, they look for growth and profitability. उनको uniqueness एक limited level तक समझ आएगी आपकी कंपनी के. आप दुनिया को बदल के रख देना चाहते हो वाला जज्बा है, बहुत अच्छी बात है, but at the same time all they mean is business. So you need to focus कि आप उनको you're able to show them the money. Then only they'll invest in your company. And the target, the fourth hack is target is to win investors' faith and never try to bluff the investors. So my friends, please understand, don't lie to them. Don't try to cook up stories. Always be backed with facts and figures and research and sources. आपके पास presentation में मत mention कीजिए, but होना चाहिए. क्योंकि I have seen a lot of investors taking कि क्या source है, आप उनको please बताइए जो आप numbers quote कर रहे हो. Please show them the growth trajectory of the business in terms of not just the Excel numbers, but literally आप कैसे grow करोगे. And by the way, investors को पता होता है कि ये technology कितना काम करेगी या नहीं करेगी. For example, all of us know that the first car which ran on hydrogen and water was discovered 20-25 years back. But आज तक उसका commercial testing नहीं हुआ, commercially test होके, it has not come to the market. So there is a reason why it has not come to the market, and it will take time. So currently, electric cars भी आ गई हैं, hydrogen वाली cars नहीं आई है. So what you see in the market, as up and running is what something which will be sold to the investors. So commercial success of any product is extremely important. Please मत भूलिएगा. Fifth hack is storytelling is an art and you need to master it scientifically. So please understand, you need to really work hard on your storytelling. इसके ऊपर, there are various videos on YouTube. You can very well see. There are a lot of ways how do you pitch yourself. I think somebody has to mute. There's some background noise, and then investors want to know how do you have failed in the past and how positively have you applied the learnings. It's again, you're the master of the game and you have to do the entire homework. Please be very thorough with your numbers and all the beauty lies in the details here. So I think ये lies की spelling गलत है. ये lies झूठ वाला lies है. So I'll rectify it. But understand, my friends, कि details आपको बताना पड़ेगा उनको if they ask you. And they always want to know how big this can become.
because and how much are you capable to take it? So scalability with sustainability is extremely important, and you'll have to show it to them. The last two hats, the eighth one is investors always invest on the jockey and not the horse. तो पैसा आप पे लग रहा है, आइडिया पे नहीं लग रहा है, क्योंकि वही आइडिया कोई नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकता है और गया होगा. Google, please understand, my friends, Google was the 85th search engine when it was launched. There were various search engines by various companies, and Yahoo, MSN, Hotmail से लेके Netscape से लेके बहुत सारे 84 registered search engines थे दुनिया में, लेकिन Google 85th हुआ. Google is one of the largest companies in the world today, and what Google is, everybody knows. So the money is always on the jockey and not the horse. So the risk quotient for an early stage is very, very high, and they only bet on the caliber and the problem-solving attitude of the founders. So आपके पास ना 200 problems आएगी यार रोज की, और 200 problems में से 195 या 198 तो आपको उसी दिन solve करना पड़ेगा. So you have to be a good troubleshooter. If you are not a troubleshooter, then maybe entrepreneurship is not for you. So if you can land into any trouble, that's okay, but you have to come out of that trouble and have faith and in your business idea, in your team. That's very, very important. So let's have the questions, my friends. Q&A session. I think we have good half an hour to 40 minutes. So Atul sir, we can take questions from all the audience and students. यार ये last slide है ना, ये एक line का है, 9th hack, but having faith in yourself and your business idea. But ये बहुत बहुत important है, क्योंकि there will be rejections, there will be ample of rejections. So you'll have to make sure कि you don't lose conviction in your business. Naman, Atul sir, are you there? Yes, sir, we are there. Yeah. So we'll take the questions, and I think post that I have one more slide to share with you all. Shanil has a question from Anshul. Shanil is in Meditech and a startup. Sure. Question you can. Please go. Thank you so much. So simple question is that we are in middle of some early stage or growth stage kind of thing. So I want to understand at this stage how much importance is given by the investor to the competitive advantage or competitive. So for example, if I have some competitors and not yet figured out very strong mode, so like what happens in that case at the investor mind? Okay, so very, very pertinent question here. Here, I'll tell you, don't think that your idea is very unique. Why I say this is somewhere, somebody in some part of the world must definitely be working on it. Could be ahead of you, could be behind you. Just that he's not come in the limelight. He may not have come into the media. So I don't know. The speed at which you can execute is extremely important. Yes, all the investors will give first movers advantage for sure. लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है. That we've seen in various cases. If you don't do the catching up. One of my portfolio companies, was just started 6 months before Mamaearth, and they were doing far better. And they helped Mamaearth go into one of the exports of the countries. But then Mamaearth picked up like anything here. And today Mamaearth is a listed company. It's close to 8, 9 or 10,000 crores of valuation. My startup must be around 1,000 crore valuation at this point of time, but still a long way to go. So it doesn't matter that they were far beforehand. And I'm giving you a recent example. There are ample of examples in the past as well. Don't want to take you to Orkut and Google, Orkut and Facebook sort of an example, because आप बोलोगे अरे सर क्या 15 साल पुरानी बात कर रहे हो आप. It's not relevant today. So I'm giving you a relevant example. So
it's extremely important that speed at which the execution will happen from now onwards will be the game changer. तो क्योंकि क्या होता है यार, आपको नहीं पता आपका कॉम्पिटिटर शायद आपसे 15 मिलियन ज्यादा रेस कर ले, या 10 मिलियन ज्यादा रेस कर ले, या 5 मिलियन कर ले, या आपसे 6 महीना पहले पैसा रेस कर ले, and he is able to hire the best of the resources whom you are thinking of hiring. तब क्या करोगे? So I think speed at which, and see, आप ये भी समझो यार, स्टार्टअप्स को वैल्यूएशन क्यों मिलता है? लोग बोलते हैं यार बहुत सारे कि स्टार्टअप स्कैम है, स्टार्टअप फ्रॉड है. भाई कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है. पेटीएम ने वो करके दिखाया है 10 साल में जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 70 साल में नहीं कर पाए यार. किसने रोका था बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि भैया आप you become the largest fintech of the country? Nobody stopped. Right? आज की डेट में पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है और 2-3 और है बस. So please understand that speed of execution is extremely important here. Competitive advantage आपको मिलेगा definitely, लेकिन जितना जल्दी आप फंड रेज कर पाओगे, जितना जल्दी आप मार्केट्स कैप्चर कर पाओगे, नए क्लाइंट्स ला पाओगे, वो इम्पोर्टेंट है. थैंक यू. Sorry, just a little follow up. Yeah. So for example, अगर कोई बहुत ज्यादा strong moat नहीं भी है, and if all the players are like early movers, then at this stage the speed at which you are acquiring the customer vis-a-vis the other one is acquiring can be like considered strongly for valuation and investment purposes. So again, not just acquiring the clients and customers, but also being profitable. तो अभी क्या होगा कि आपके पास 600 कस्टमर्स हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सिर्फ हार्डली एनीथिंग है और 2 to 5% है. Vis-a-vis, the other person has 200 customers, but his profitability is 15%. So he's far more sensible. Then वो आपसे कम मेहनत करके और profitability or revenue, मतलब profit percentage is important or the revenue value is important. या दोनों important है. बट रेवेन्यू आप 100 करोड़ है और 2 करोड़ प्रॉफिट है और 40 करोड़ पे 5 करोड़ का प्रॉफिट है, तो आप फिर यही बोलोगे ना यार कि एक बंदा तो गधा मजदूरी कर रहा है और दूसरा स्मार्ट वर्क कर रहा है. Which one would you go with? So then you'll say that when in the beginning this company is not done smart work, why do I expect? See, also understand, once you set up a specific price, I start giving my product for 1,000 rupees. Increasing it to 2,000 will be a challenge. But अगर मैं 1,600 या 1,700 में दे रहा हूँ, उसको 2,000 करना होगा, तो will be far easier. So what I'm trying to say कि globally and in India also in the last 3 to 4 years, the shift has happened a lot towards profitability since the beginning of this decade. Since we've seen the Web3 come in, Web3 unfortunately came with a lot of crypto element to it, which was not the only case. Metaverse was a big thing. But please understand, Web 3.2 में क्या होगा? Web 3.2 में ये होगा यार कि आपको ना I don't know लोग मेटावर्स पे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा होगा, बट यहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स होंगे, ये क्रिएटर्स की इकोनॉमी होगी. आज तक गूगल ने, यूट्यूब ने, फेसबुक ने क्रिएटर्स को पैसा नहीं दिया था, पर अब ये जितने भी नए एप्स आ रहे हैं लाइक टिकटॉक और चिंगारी और अदर्स, दे आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ चंक विद द क्रिएटर्स. सो देयर इज अ क्रिएटर इकोनॉमी बीइंग क्रिएटेड and in a very large way, where minuscular of like hardly 0.02% or 0.2% of the Google's revenue goes to its creators, or not Google, sorry, YouTube's revenue. जो चेंज हो जाएगा यार, 10%, 20% शायद उससे भी ज्यादा शेयर किया जाएगा. तो क्रिएटर इकोनॉमी होगी और प्रोडक्ट कंपनी है और सर्विसेज कंपनी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिस्टिंग्विश होगा. हो सकता है ये ट्रेंड आते आते 1-2 साल लग जाए, बट इवेंचुअली उसी के ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस होगा. ये बात पक्की है.
Okay, got it, got it. Thank you so much. Sure. Thanks. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. बट वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यार, क्योंकि क्या होता है इसका कोई भी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे सकते. मैं आपको हमेशा ट्रेंड बता सकता हूँ. जैसे जब मेरा और अतुल सर का बचपन था तो चांद पे हम जा चुके थे. We had explored the moon, but technology didn't go in that direction. Please understand, technology was connecting human to human in terms of telecom, in terms of cell phones and pagers and CDMA phones. And then emails came in, and then messaging came in, and then WhatsApp came in, and then there are smarter ways of phones came. Even after having Blackberries, smartphone को आए हुए कितना समय हुआ है यार? 8 या 9 साल हुआ है. 10 साल भी पूरे नहीं हुए. तो एप्स को आए हुए तो 7 या 8 साल ही हुआ है. और व्हाट्सएप को तो आए हुए शायद 5 या 6 साल हुआ है. सो जो लोग बहुत पहले जिन्होंने पेजर यूज किया है, या हम लोग तो टर्न कॉल्स लगाते थे, तो आप सोचो ना, हमारे लिए तो देयर हैज बीन अ सी चेंज यार. वी हैव सीन, हमको हमारे स्कूल डेज में था कि एक ईमेल नाम की एक चीज आई है यार, जिससे आप ना फाइल भेज सकते हो. बहुत बड़ी चीज होती थी कि ईमेल से आप फाइल भेज सकते हो और दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हो. सो अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ टेक्नोलॉजी. We were told in our childhood that we will holiday on the moon, but still it's too expensive. Technology has to be cheaper, has to be available to everybody. जियो के फोन्स कितना टाइम हुआ है यार? 6 साल 7 साल हुआ है, जिसने डेटा को सस्ता किया है. नहीं तो 400 रुपए में 2 GB मिलता था. आज हमको दिन का 2 GB मिलता है और 400 रुपए का बिल नहीं आता है महीने का. The data has become 98% cheaper यार. Please understand, it has not been long, and I want you guys to think in that direction. I want you to think, please. आप लोग ना, वो क्रिएटिव डिस्कशन होगा जब अतुल सर के साथ, अपने फैकल्टीज के साथ, सब लोगों के साथ ये करोगे कि भाई अब फ्यूचर का बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा, कि आने वाले लोग समय में लोग कैसे करेंगे ट्रांजैक्ट. कि आज की डेट में तो आपको स्विगी, जोमेटो और जेप्टो से आपको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है. 15-20 मिनट पे डिलीवरी घर पे आ जाती है. चाहे आप सब्जी बोलो, दूध बोलो, ग्रोसरी बोलो, एवरीथिंग. Prime, Amazon and other few apps deliver in like 2 days, 3 days, yeah, whatever in the world you order. तो टेक्नोलॉजी किस डायरेक्शन में जा रहा है? इसके कारण कमर्शियल रियल एस्टेट काफी सस्ता हो रहा है, लेकिन कितना चीप होगा ये भी हमको देखना है. और अमेजोन वाले जेफ बीजोस ने खरीद लिया भैया होल फूड्स $20 बिलियन में. उसने बोला कि रिटेल इज हियर टू स्टे. क्योंकि रिटेल का एक्सपीरियंस आप ये भी देखो ना, दुनिया की 90%, 95% जनता को तो आज भी फिजिकली जाके खरीदने में मजा आता है. व्हाई नॉट? there is a DMart ready also where you can order on app and you can go to DMart also. पर आप प्रेफर करते हो जाना क्योंकि 4 नई चीज दिख जाती है, जो ऐप पे ना दिखे. There's a look and feel also. So it's changing, yeah. Still, online is 5 to 7%, 8% of how India shops. And I would recommend a book called 6 Billion Shoppers. सबको ये बुक पढ़ना चाहिए. इससे आइडिया लगेगा यार. ये अलीबाबा के एक एक्स एग्जीक्यूटिव की ने लिखी थी ये बुक. ही इज एन अमेरिकन गाय, वर्क विद अलीबाबा एंड देन वर्क विद गूगल. वो बोलता है आपके कस्टमर्स जो है ना वो 6 बिलियन लोग हैं, लेकिन जो पूरी उस समय जब बुक लिखी गई पूरी दुनिया की पॉपुलेशन थी, लेकिन वो कैसे आपके टारगेट बनेंगे ये उस बुक में समझाया है. सो इट्स अ फैबुलस बुक टू बी रेड ऑन रिटेल. कंज्यूमर बिजनेस में अगर आप हो, उससे आपको बहुत सॉलिड पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको मजा आ जाएगी. सो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन. Any other question from any one of you? Naman, can you read the question for me, please? भाई बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है और इसका भी बहुत जेनरिक आंसर दूंगा मैं. मुझे नहीं पता ऑनेस्टली. इम्पैक्ट करेगा
और अगेन आई विल गो बैक टू 30 years 25 35 years, जब कंप्यूटर्स आए थे तो बोले थे यार कि ह्यूमंस का काम खा जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स हर जगह हैं। और जब जेरोक्स मशीन्स आई तो बोला गया कि यार बुक्स का काम खा जाएगा, ऐसा नहीं है, बुक्स आज भी है। एंड जब सेलफोन्स आए तो बोला कि यार पीसीओस का काम खा जाएंगे। तो वही पीसीओ जो थे, 3 लाख से ज्यादा पीसीओ थे पूरे भारत में, उन्होंने वही मोबाइल फोन का रिचार्ज बेचना चालू कर दिया, उनके कवर्स बेचने चालू कर दिए, सिम कार्ड बेचना चालू कर दिया, they started keeping stationery and 20 different things. So business models evolve. It's always AI कैसे डिस्टर्ब करेगा नहीं, AI के साथ क्या क्या होगा। आप ये सोचो कि आज की डेट में, आज से 20 साल पहले कोई कैफे नहीं होते थे यार, कोई बरिस्ता, कोई कैफे कॉफी डे, कोई ग्लोरिया जीन्स कॉफी या स्टारबक्स नहीं होता था। ये कैफेज आने लगे हैं और कितने स्पेसिफिक कैफेज आ गए हैं। चाय का अलग कैफे हो गया है, अंडे का फंडा आ गया है कि यू जस्ट गेट ओनली डिशेस रिलेटेड टू एग्स। There are only specific Maggi joints. He's just selling 20-25 types of Maggi यार। आपके भी सिटी में होंगे। Everywhere there are places. There are chai stores, Amrutulya and all. He's just selling tea, and tea of 20-30 variety, 50 variety. तो वो स्पेशलाइजेशन का जमाना आएगा यार। AI में भी, AI किसी का धंधा नहीं खाएगा। Honestly, you have to adopt to AI. अब देखो ना, चैट जीपीटी इतनी लाइन लगी होती थी चैट जीपीटी के लिए, आज एक दिन में 6 मेल आते हैं चैट जीपीटी के, भैया यूज कर लो हमको, ठीक है। तो नॉट एवरी, और चैट जीपीटी ने किसी की भी यूनिवर्सिटी का काम बंद नहीं किया, किसी का भी नॉलेज वेयर बंद नहीं हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, चैट जीपीटी इज एन एनेबलर। आजकल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज क्या बोल रहे हैं, एक काम करो, अपना ऐसे भी बना के लाओ और चैट जीपीटी का भी ऐसे बना के लाओ, और दोनों में कंपैरिजन लिखो। Schools have also become smarter, universities have become smarter. So AI will not eat away. See, this is just the beginning of AI, my friends. हम जब टेलीकॉम आया ना, तब टेलीकॉम में सोचते थे यार कि ब्लैकबेरी फोन्स हैं, क्या इससे बढ़िया चीज आएगी बॉस, बीबीएम मैसेजिंग है, क्वार्टी कॉल फोन्स है, वेरी हैंडी एंड स्लीक। 45,000 का फोन होता था यार, बोल्ट 2, so expensive. And I'm talking 10 years, 12 years back. 50,000 का फोन आज भी एक्सपेंसिव फोन मानते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि then, different versions came in. BlackBerry never faded out. BlackBerry had to convert itself to a smartphone only. So, हर किसी को अडेप्ट करना पड़ेगा। AI इम्पैक्ट करेगा, AI हमारे बिजनेस को फास्ट कर देगा यार, हमारे सोचने के तरीके को फास्ट कर देगा। शायद 3-4 दिन की वर्किंग हो जाएगी, 3 दिन का हॉलीडे हो जाएगा, तो वो 3 दिन में ना लोग और सोचने लगेंगे कि क्या करूं मैं। तो आप ये सोचो कि ट्रैवल, लीजर, ये सब लोगों का बहुत ज्यादा इस पे एम्फोसिस हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर पे एम्फोसिस आएगा। आप सोचोगे कि यार मैंने शायद स्कूल डेज में सोचता था मैं गिटार सीखने का, आई शुड लर्न द गिटार, और वन ऑफ यू गर्ल्स माइट थिंक दैट व्हाट इफ आई एम 20 or 25 today, I should learn Bharatnatyam and go, or I should learn thing, I should go back to meditation, something or the other which soothes your body, your mind and your soul. तो लीजर एक्टिविटीज बहुत बढ़ने वाली है यार। तो ट्रैवल एंड लीजर पे बहुत एम्फोसिस होगा, ट्रैवल के एक्सपीरियंसेस चेंज होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके उज्जैन में शायद 1 या 2 5 स्टार है, शायद अभी ताज आ रहा है। I can guarantee you in the next 5 years there will be 10 5-star hotels. और अयोध्या will be one of the biggest tourist and pilgrimage destinations of the world, not just of India, of the world, my friends. अब आप सोचो वहां पे ट्रैवल एंड टूरिज्म और होटलिंग और एंटरटेनमेंट का कितना स्कोप है, क्योंकि फॉरेनर्स 1 या 2 या 3 मंदिर जाएंगे, उसके बाद उनको लीजर चाहिए, उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स चाहिए। क्या आप वो डेवलप कर सकते हो क्या?
you know, Gujarat has come up with such fabulous adventure sports in Ambaji and, you know, smaller places you cannot imagine here. I know there are 10 different resorts in Lonavala and Ambaji and smaller places where you wouldn't even imagine. और लाइन लगी होती है यार. The rooms are like as expensive as starting from 10-12,000 rupees to a 25,000 rupees per night. तो think about कि AI के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं. AI तो डिस्टर्ब करेगा, जब करेगा तब करेगा यार. लेकिन क्या आप AI के साथ काम कर पाओगे? डिस्टर्ब करते करते तक तो शायद हम सबके सब बुढ़े हो जाएंगे. बट साथ में काम करने के लिए हमारी कितनी रेडीनेस है, कितनी अडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि अगले 10-15 साल तो हमको उसको समझने में लगेगा, उसको साथ में काम करने में लगेगा, फिर चीजें स्लो डाउन होगी. अभी इतना जल्दी कोई स्लो डाउन नहीं होगी. अब आज देखो, आज आप रोड पे बैलगाड़ी भी दौड़ रही है, इलेक्ट्रिक कार्स भी दौड़ रही है, डीजल कार भी दौड़ रही है, और आपका वो छकड़ा वाला भटसुअर भी दौड़ रहा है. ऑल ऑफ दैट इज फ्लाइंग टुगेदर यार. Mumbai still has those Kala Pila taxis, yeah. I had been listening that they will fade out, and you know, for the last 20 years I've been listening. Think about this. कहाँ है BS3, BS4 के you know, standards? Those cars are running on BS2 also, so they are getting faded out, but very gradually. आप कैलकाटा चले जाओ, आज भी वो एम्बेसडर कार चल रही है, सब खटा रहा है. You'll laugh at yourself when you'll see that the meter is starting from 35 rupees. It's insanely expensive. But चल रही है, हमारा ही देश है, प्यारा शहर है कैलकाटा. तो टाइम लगता है यार. जब वो 15 साल वाला स्क्रैप का रूल जो अब लेके आ गए गडकरी जी, वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल हो जाएगा, पोल्यूशन नॉर्म स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल हो जाएंगे, तब इन चीजों में भी चेंज आएगा. तो यार इंडिया ना, एक गुरचंद दास की एक बुक है, आप लोग प्लीज पढ़िएगा, The Elephant Paradigm. India is known for jumping the value chain. हमने कभी 2G के बाद शायद 3G यूज किया है यार, सबके सब 4G पे कूद के आ गए. और जब मैं बोल रहा हूँ सबके सब ना, तो आपके फोन पे 3G दिखाता था, लेकिन वो 2G एज आता था. आई एम टेलिंग यू, 94% of India has not properly used 3G. From 2G to we jump to 4G. So that book talks about you know, the elephant paradigm. The book talks about how India jumps the value chain and how it will be a Vishwaguru and lead the world. आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा यार, आपको आइडिया आएगा कि किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश में. इट्स इनसेन यार, इट्स इनसेन. द काइंड ऑफ railway network that we are developing, the kind of electrification we are doing, we are fabulous यार. As a nation, we should be proud, and as people of Indore, you should be proud of yourself. आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हो cleanliness में. You know, the drive that you guys have done, 8 years, you are the best in the country. हर सिटी को आपसे जलन है भैया, इतने साफ सुथरा है. वो जोक है वहां पे कि अगर आप विजयनगर के कहीं पे भी खड़े हो, नहा धो के नहीं खड़े हो सुबह 10-11 बजे, आपको म्युनिसिपल वाले आके नहला धुला के जाते हैं, इतना सफाई है. So that's what I hear about Indore, and I'm proud of being part of Indore, my friends. So see, change comes from every individual here, every individual, and you see the change around the country. And I am not one of those who will say कि यार नहीं हो रहा है change, pessimism है. अरे बहुत दम है economy में, I'm telling you. Next 20 years belong to us. इतना traction है economy में. I belong to Mumbai. I'm in the stock market. I interact with a lot of FIIs, DIIs, a lot of private equity funds, large capital funds. There are at least 30 to 40 funds ready to come to India. More than 200 funds are registering at the gift city Ahmedabad. वो लोग सारे के सारे ना सिंगापुर और हांगकांग तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन है अब, बिकॉज इट्स चाइना टेरिटरी. सिंगापुर और दुबई का धंधा खा लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ. दे विल ईट अप द बिजनेस. वहां से इन्वेस्टमेंट्स आएगा, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल मॉडल. एंड 10 years का टैक्स हॉलीडे दे दिया है यार. मोदी इज अ वेरी स्मार्ट मैन. आई एम टेलिंग यू, वी आर लकी टू हैव हिम एज अ पीएम. आई एम नॉट अ बीजेपी स्पोक्समैन. आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल हियर, क्योंकि अब तो वहां पे इलेक्शन भी हो गया, तो मैं आपको क्या ही इन्फ्लुएंस कर लूंगा. यू ऑल आर स्मार्ट, बट प्लीज अंडरस्टैंड,
Yeah, we are lucky to have him as a PM boss. Today he was riding the Tejas at the age of 70. I don't know, will I be able to walk properly at the age of 70 also? So we've got a fabulous leadership in place. They're working hard and going to the next level. So I think let's focus and get the work done here. बहुत traction है economy में. Just one sec, friends. Just one sec. Yeah, sorry, I'm back. So यार इकोनॉमी में बहुत दम है. आपको ये देखना है कि how much can you generate from this economy and how much are you able to work with AI in tandem with AI. So that's all. And I'm wishing you all the best. Yeah, thanks for patient listening. I wish you all the abundant success, wealth, and fame in life. And take good care of yourselves, your health of your family, and not just dream big, but please take concrete steps to make your dreams become reality. And see you all soon. Please add me on LinkedIn. I'm there. And I'm very grateful to Atul sir and his team, for having me here. So, Thank you, Anshul sir, for taking your time from such a busy schedule on a weekend. So sorry to bother you on Saturdays. no, not at all. Not at all. All my pleasure. And Yeah, it was great thank listening you. to you always. It was great listening to you always, and we got an insight and very good insight on how funding happens, and maybe possible this will benefit many of us on taking things to decide, and also to understand how money is important and where our ecosystem is going on. So thank you very much. So- And yeah, please. So Atul sir, there are a lot of, I think Parikshit has raised his hand. Parikshit, you can ask your question. Yeah, There- Parikshit is there. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा सबको कि यार ये जो मैंने बताया है ना, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस के हैं. There can be various ways of raising funds. यार आप अपना खुद का तरीका निकाल सकते हो. Why not? I mean, sky is the limit. Crowd funding होती है. भारत में कम होती है, but crowd funding is the way to raise funds, and we've seen that Impact Guru doing it, Keto is doing it for a lot of projects. So yeah, Parikshit, please go ahead and ask your question. Sorry, that was a mistake actually. Sorry. अच्छा, नहीं, no worries. ठीक है, but done. So thank you everyone. I wish you all massive success here. Let's work together to make India proud. और बहुत अच्छा काम हो रहा है. मैं आपको बता रहा हूँ. I am extremely excited. I'm thrilled. This country is in the right hands here, in right leadership, and we're doing really well. So thank you all. Thank you very much, sir. Thank you very much, and see you Thank soon you. again on the platform. Yes, absolutely. Or virtually. And thank you for all your support to all of us. Anytime we reach out to you and give your time to be with us. All my Have a nice pleasure. evening, sir. And thank you You everyone too, you for too. joining us for this session and taking your time on this weekend to listen, Anshul sir. And thank you, Anshul sir. Thank you very much, everyone. Take care, Happy everyone. weekend. Bye. Bye.